I just want to congratulate Kamran on this initiative. I think the tech show is going to be brilliant. आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहती हूँ जो ना सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं बट लिटरली हमारे मुल्क को एक ऐसा फ्यूचर दिखा रहे हैं जो आई फील कोई नहीं कर रहा है, और उनका नाम है मिस्टर उमर आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम सो ग्रेटफुल टू बी हियर एंड वी आर एट द नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची। इट्स अमेजिंग कि आप दो तरह के चैलेंजेस को आप लोग फेस करने में मदद कर रहे हैं लोगों की, लाइक इस तरह के भी और उस तरह के भी, राइट? सो हियर्स द थिंग, एक तरफ हम इन्वेस्टर एजुकेशन कर रहे हैं जी, ताकि इन्वेस्टर को समझ में आए कि वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है, राइट? इट्स सच अ लर्निंग प्रोसेस फॉर समवन लाइक मी आल्सो राइट नाउ। और दूसरी तरफ हम स्टार्टअप्स को भी ट्रेन कर रहे हैं कि भाई जब आपको पैसे मिलें तो आप क्या करें, व्हाट शुड यू डू विद इट, राइट? तो एक कुछ केसेस हुए थे शुरू में जहाँ पे आई एम श्योर पीपल हैव ट्राइड टू दो स्टार्टअप ने जाके नई करोला निकाल ली, तो जिसके ऊपर वीसीज ने जो है ना बहुत मतलब नापसंदीदा उसको करार दिया जी, कि भाई मैंने आपको पैसे आपकी लाइफस्टाइल को एनहांस करने के लिए नहीं दिए, मैंने आपको पैसे दिए हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, राइट? उसी तरीके से जो जब ये बड़े अमाउंट्स आने शुरू हुए जी, एक बहुत बड़ा एग्जांपल था एयरलिफ्ट का जिसमें तकरीबन दैट्स फाइन। देखिए जैसे इंसान का अल्टीमेट एंड होता है मौत, सही, राइट? ट्रू, ऑल ह्यूमंस डाई, वी ऑल हैव टू डाई। उसी तरीके से 99% ऑफ स्टार्टअप्स डाई इवेंचुअली। Really? Yeah. And 90% of them, interesting insight. 90% of them would die within the first 5 years, and 80% of them die within the first year, because they don't have a good business model, they don't have a product market fit, they don't have the right team, they don't have the right technology, they don't have enough money. It could be any number of reasons why startups fail, but the statistics globally are that 90. So this is a global number. Oh yes, this is not a Pakistani number. This is 90%. Globally भी ये हो रहा है. 90% of startups fail in the first 5 years, right? Wow. अब VC जब पैसे लगाता है, the way that they look at it is a numbers game. It's a very professional, proper system के साथ है. वो इधर हेरा फेरी नहीं करते ना? Yes and no. अच्छा, इधर भी है. नहीं, हेरा फेरी नहीं है. बट देखिए जब एक बिल्कुल छोटी कंपनी होती है जिसको हम बोलते हैं प्री सीड, अभी तक वो उसने अपना पहला अंडा दिया नहीं है, अच्छा सही, ठीक है, अभी वो टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, दे नीड मनी टू फिनिश द टेक्नोलॉजी, दे नीड मनी टू बिल्ड अ टीम, दे नीड मनी टू फॉर मार्केटिंग व्हाटएवर, छोटे छोटे पैसे उठ $1,00,000 $2 लाख, $1,00,000 $2 लाख, $20,000, दीज आर स्मॉल अमाउंट्स। तो वीसी क्या करता है, कहता है यार मैं ऐसा करता हूँ कि आई एम गोइंग टू टेक अ बेट ऑन 20 स्टार्टअप्स। ओह इंटरेस्टिंग। So it's a little bit of satta. हाँ, मतलब but I mean twist आ रहा है ना story में. So they try to qualify the startups, but there are no numbers. The startup is too small. There's no revenue. So what are you basing it on? You're basing it on the founder. And what he's trying to sell. He or she. He or she. Right? Yes. What their vision is. How disciplined are they? How good are they at what they do? What is the size of the problem they're solving? Now. एक दफ़ा ये चीज़ वीसी को समझ में आ जाती है, फॉर देम इट बिकम्स अ मच ईजियर प्रोसेस, बिकॉज नाउ यू आर सेइंग यार ये बंदा फॉर एग्जांपल कराची में जो ट्रैफिक कंजेशन है उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हाँ, उसने एक फॉर्मूला निकाल लिया टू फिक्स इट। कार पूलिंग हो सकती है, राइड शेयरिंग हो सकती है, 1000 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बाइकिया इज एट द एंड ऑफ द डे बाइकिया इज डूइंग दैट एज वेल, राइट? सॉल्विंग ट्रैफिक कंजेशन, गेटिंग पीपल, गुड्स, सर्विसेज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो अब वो उसने फैसला कर लिया, उसने कहा यार मुझे ज़हरा की शक्ल अच्छी लग रही है, मैं ज़हरा को $1,00,000 दूंगा एंड आई विल टेक 10% ऑफ द कंपनी इन रिटर्न। तो यानी कंपनी की अब वैल्यू हो गई $1 million। ऑफ कोर्स, एकदम से ओवरनाइट, राइट? बट अभी तो आप बेच नहीं सकते ना आपके शेयर्स की कोई वैल्यू है, ना वीसी के शेयर्स की वैल्यू है। अब वीसी ने कहा कि इनके स्टार्टअप की भी मुझे शक्ल अच्छी लगती है, इनका भी आइडिया बहुत अच्छा है, इनका भी प्रोडक्ट अच्छा है, इनका भी प्रोडक्ट अच्छा है, सबको ले लो। अब 2 साल में उन्होंने 20 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर दिया $1,00,000। ओके, बट द अमाउंट्स आर स्मॉल, बट वो 1 लाख, देखिए $1,00,000 स्मॉल नहीं होता है। अच्छा हाँ, ये भी आपने सही बात। आपसे कोई आके मांग लिया भी $1,00,000, आप क्या करेंगी? नहीं, आप कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, आगे बढ़े। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, राइट? अब वीसी से महीने में 500 लोग
पिच करते हैं, उस 500 में से वो शायद एक को एक्सेप्ट करता है या दो को एक्सेप्ट करता है. अच्छा, सो दे इवेंचुअली लॉक एक या दो ही होते हैं. हाँ, देयर इज अ ह्यूज पिचिंग प्रोसेस, बट देयर आर thousands of startups, not just in Pakistan, and VCs are operating internationally. Yes. So when a VC is operating in Pakistan, they're also operating in the UK, in Vietnam, in Tanzania, in India, all over the world basically. Indonesia, Bangladesh and Pakistan are some of the hottest markets now, South Asian right? countries, yes. So you're competing with Bangladeshi startups for the same funding. People know exactly what they're getting into, they know exactly क्यों पैसे आ रहे हैं, they know. अब हेरा फेरी देखें, गलतियाँ होती हैं. Startups, अगर हर startup perfectly चलता तो कोई startup fail ही नहीं होता. That's true. But remember, these are people who are trying to change the world. They are. They really They're trying to disrupt something that is happening today. That's true. करीम आया था 8-10 साल पहले. सही. जब ये किसी से सवाल पूछा गया कि आप एज अ फीमेल आप किसी गैर मर्द की गाड़ी में बैठ के पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएंगी, मोस्ट पीपल वुड से है दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं क्या लग रही हूँ तुम्हें, what kind of a female do you think I am? Reaction right? would be like, oh my god. And how did they break that? They created an ad where a daughter was asking her father, like they changed the कि भाई बाबा मुझे फलाने दोस्त के यहाँ जाना है, वो कह रहा है बेटा मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो अच्छा मैं फिर करीम को बुलाती हूँ, और बाप टक करके सीट से बाहर निकलते हैं, ये करीम कौन है? Right? So the idea was to generate controversy and conversation. They broke the taboo basically, and they did it brilliantly. And at one time they were spending incredibly large amounts of money in marketing in Pakistan. They did, right? Yes. I mean, we're talking about millions, from billboards to digital millions marketing, of dollars, millions of dollars every month. Every month. Now, what was the point? Wow. When you look at, they were operating in 17 countries. Yes, it was international again. Saudi, UAE, Kuwait, Bahrain, Iraq, Iran, पता नहीं कहाँ पे. You're right, absolutely. Uber tried to beat them. It did. It did. And it couldn't beat them. No. So they finally caved and Even they bought them. I stopped using Uber. I right? only use. They bought them. तो उस वक्त करीम $3 billion की बिकी थी. 3 billion. Yes, that is a lot of zeros. That's a lot of zeros. That's 9 zeros. Yes, to be precise. Not 9 zeros. Not 6 zeros. Not 6. 9 zeros. A lot of money. That's a lot of money. Now, that is the dream. So you build a venture from scratch. You get investment along the way to help you continue to grow. And every time you raise investment, you do it at a higher valuation. तो पहले आपने जब $1,00,000 उठाए तो आपकी कंपनी की वैल्यू नॉमिनल वैल्यू या नोशनल वैल्यू $1 million थी. हाँ, अब आपने वो $1,00,000 डाले, आपने 10,000 नए कस्टमर ऑन बोर्ड कर लिए. अब आपकी कंपनी में रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है, पैसे भी आ रहे हैं. अब आप एक इन्वेस्टर आपके पास आया कि जी देखें हम आपको $1 million देना चाहते हैं. बट अभी तो आपकी कंपनी की वैल्यू 1 million नहीं है, अब आपकी कंपनी की वैल्यू 10 million है. तो अब आपने जब 1 million लिया तो आपकी कंपनी की वैल्यू 10 million हो गई. ठीक है. अब मजे की बात ये कि जिसने वो पहले $1,00,000 डाले थे, हाँ, उसका क्या बना? उसकी $1,00,000 की वैल्यू $1 million हो गई, क्योंकि he had 10%. It's a multiplier effect. Multiplier effect. So in an ideal world, जो अर्ली पैसा डालता है वो पैसे ज़्यादा कमाता है जब नेक्स्ट फंडिंग आती है. द चैलेंज इज, अगर आप लेट्स से अगर ये बंदा अभी कहता है कि यार मेरे $1,00,000 के वैल्यू, because he owns 10% of the company, yes, right? They do. You're right. Now it's a $10 million company, so his 10% is worth $1 million. Wow. वो कहता है यार मुझे ज़रूरत नहीं है पैसों की, मैं अभी होल्ड करता हूँ. ठीक है. अब इस कंपनी को $1 million मिल गए. उन्होंने अब 1,00,000 नए कस्टमर ले आए हैं. उन्होंने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, हर जगह इन्होंने अपना एक दफ्तर खोल लिया और ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और रेवेन्यू आ रही है. yes, revenue अब एक बड़ा वीसी यूएस से आपको कॉल करता है कि जी मैं आपकी कंपनी में $10 million डालना चाह रहा हूँ. This is so interesting. और क्या वैल्यूएशन जी? $100 million की वैल्यूएशन पे. ओह अच्छा. कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ जा रहा है ये? Now what has happened? That guy who put $100,000 at the beginning. Yes, the first guy. His share is now worth $10 million. So you're right. It is the multiplier effect for sure. Now, does this happen with every startup? Absolutely not. But ये economy के लिए कितना अच्छा. Exactly. I mean, I can just feel like I'm having goosebumps just thinking about how much money and revenue we can generate. But इससे ज़्यादा हलाल investment मेरे हिसाब से दुनिया में कोई नहीं है. I like how you're putting the You know halal why? investment. No, because I'm trying to convince local investors that this is a very halal option because it is. देखिए हलाल investment किस चीज़ से होता है? रिस्क से.
Are you taking risk? Oh yes. A huge risk. Because here. VC investment is the most risky investment in the world. अगर founder succeed करता है तो आप succeed करते हैं, अगर founder fail हो गया तो आपके पैसे लुट गए. अगर however 100 में से एक ने छक्का मार दिया और आपके 100 टाइम्स आपकी वहाँ पे आपको मल्टीपल मिल गया, तो बाकी जो आपने $2 मिलियन हैं वो तो चिल्लर में गए ना. वो तो literally. So that's a rounding error. Now you made $10 million on one deal, you lost $1.9 million on the other 19 deals. Do you care? No. No, because you made $8.1 million net. Wow. Yeah, absolutely. That's how VC works. And the bigger the numbers, the bigger the upside. Obviously, the bigger the risk as well, right? So much learning, viewers. So much learning just sitting in so this one this is room what we Mr. Omar right now. What we try and do is help founders get ready for investment. So train them in marketing, sales, HR, product development, supply chain, all the different aspects of running a business. We train them over a period of 6 months. Wow. Then we run investor summits where we invite global and domestic investors to come and talk to these startups. उसमें से फिर हम दुआ करते हैं कि हमारे कोई स्टार्टअप्स इतने अट्रैक्टिव निकलें कि उनकी फंड रेजिंग हो जाए. तो इस वक्त NIC कराची के जो स्टार्टअप्स हैं, they have raised over 6 billion rupees in the last 4.5 years. And that's amazing. And they have generated more than 4 billion rupees in revenue. Wow. So, and created almost 100,000 jobs. Right? Industry this is. Yeah. That's so amazing. This is the impact. This is how we measure impact in incubation. How many jobs did you create? How much money came into Pakistan because of your startups? Because of them, yeah. And how much money are they making? Yeah, absolutely. Absolutely. Thank so that's a game. For such an exciting overview of what is really going on and what a startup really is and what a startup can be. Okay, Omar साहब, एक चीज़ आप मुझे ये बताएं कि what are the major hurdles that the startups are facing today? Okay, so I would say the biggest one is staying competitive because आजकल इन्फ्लेशन बहुत हो रही है और ख़ास तौर पे तनख्वाहों में इन्फ्लेशन बहुत हो रही है. तो एक डेवलपर जो 2 साल पहले 60,000 रुपये के लिए काम करने के लिए बहुत खुश था, अभी वही डेवलपर 2 लाख रुपए मांग रहा है बिकॉज देयर इज़ अ ग्लोबल टेक शॉर्टेज. तो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हम बाहर के किसी कंपनी के साथ फ्रीलांसिंग कर लेंगे और हम डॉलर में कमाएंगे. आजकल ये फ्रीलांस और कोलैबोरेशन का भी बहुत ज़माना चल रहा है, राइट? भाई देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रीलांसर को 1% टैक्स देना है. That's true. जो लोकल बेचारा तनख्वाह कमा रहा है उसको अगर उसकी 2 लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह चली गई तो उसका 25% टैक्स कट रहा है. तो वो ये कहता है कि यार मैं या तो टैक्स दे दूं या मैं फ्रीलांस में काम कर लूं और डॉलर जब मैं लेकर आता हूं तो गवर्नमेंट मुझे सैल्यूट भी करती है. That's true. ठीक है ना. सो there is a tech drain happening in Pakistan. People are not physically leaving, but they are working in the US. They're working in the UK while they're physically in Pakistan. Yeah, so this is what COVID has taught us. कि hybrid work is the future. Work from home. So work from anywhere. It's not even work from home. It's work from anywhere. That's true. So no one cares. आप बहामास में बैठे हैं या बहादराबाद में बैठे हैं. वाकई. तो आप कहीं पे भी बैठ जाए, काम कर लें अपना. आप ये आपका ये प्रोजेक्ट है, आप ये मुकम्मल करके दें, ये पैसे लें और आगे बढ़ें. That's true. Right? So एक point of view say that is one of the challenges facing startups. The other challenges are that we don't really have a coherent startup policy from the government. So for example, दूसरे ममालिकों में अगर आप local investment को encourage करना चाहते हैं तो you give a tax rebate on people making investments into startups. जैसे हमारे यहाँ पहले होता था, म्यूचुअल फंड्स में अगर कोई इन्वेस्ट करता था तो उसका एक परसेंटेज आपको एक टैक्स रिबेट के तौर पे मिलता था. अब आजकल म्यूचुअल फंड्स में लोग नहीं कर रहे इतना इन्वेस्ट. नहीं, बिकॉज उन्होंने गवर्नमेंट ने रिवर्स कर दिया. उन्होंने कहा नहीं, अब हम नहीं देंगे रिबेट. Which was, you know, why have I not been hearing the word mutual funds anymore? That's right, because the rebate is no longer there and people are just looking at mutual funds as another investment opportunity. So if we had certain policies that, you know, encourage local investment, by giving them tax holidays, tax rebates, local investment would go up. The other challenges we face are simply infrastructural. We are on calls with VCs. हमारे यहाँ बिजली चली जाती है. Yes, startup अचानक कॉल से ड्रॉप हो गया. अब VC आपको देख रहा है, आप VC को देख रहे हैं. I think they just lost power. They said, what, is there some kind of an emergency? Like,
No, this is our This is routine. not Florida. Yeah, this is not Florida. We didn't have a storm. We just don't have power. Yeah. And so, you know, for foreign VCs to understand कि बिजली का मसला है, पानी का मसला है, रोडें ख़राब हैं, you know, basic fund safety, security का मसला. In terms of helping startups, we need more exposure. We need more. I think Pakistan needs to have better press. Generally, brand Pakistan needs to get better. The devaluation of the rupee has not helped. No. The constant fluctuations, the petrol prices. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. एक स्टार्टअप जो है, let's say they raise $1 million, ठीक है? ठीक है. No VC wants to send the money to Pakistan. And so what they do being? is because यहाँ पे जिस दिन पैसा आएगा, उस दिन the startup will have to convert it into rupees at that rate of that day. Oh. Their startups are not allowed to hold money in dollars, which is ridiculous. The and investment in this is coming time and age, investment ही उस डॉलर में आ रही है. अगर आप ये इजाजत दे दें, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी कितने लोगों के हाथ खुल जाए फिर? Hundreds of thousands of dollars, millions of dollars का फर्क पड़ सकता है पाकिस्तान के लिए. Exactly. Right? But वो इजाजत उन्होंने नहीं दी है. अब होता ये कि एक होल्डिंग कंपनी बाहर बनती है, उसके अंदर पैसे आते हैं और हर महीने एक रेमिटेंस आता है कि जी Holdco in Singapore is sending money to the operating company in Pakistan. Yes. Which is fine, but it's not ideal. It's not the way. It's not the ultimate solution to run a country. It doesn't the way solve it our be problems. in this point. Doesn't solve our problems, right? Yes. So, the State Bank of Pakistan about 3-4 months ago released a fantastic report on the state of the venture capital and private equity industry in Pakistan. Okay. And it was a frightening report. It was very. The state was not good, let's just say that. Oh, it wasn't good. No, it was terrible. It was terrible. I thought कुछ अच्छा हो गया. Until 3 months ago, there was only one VC fund domiciled in Pakistan. Only one. Only one. The rest of them have offices here, but all the funds are domiciled abroad. Because they say that trying to deal with the regulations of the regulator in Pakistan is impossible. So, पैसे लाना एक मुसीबत, पैसे बाहर भेजना, oh my God, वो तो एक और भाई अगर एक बंदे ने बाहर से पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो बाहर लेके जाएगा अपने प्रॉफिट्स. यू हैव टू अलाउ दैट. वो क्या करेगा? क्या जिंदगी भर यहाँ वो टंडवाला यार में जाके जमीन खरीदेगा आपके लिए? क्या करेगा वो पैसों के साथ? ही हैज टू मूव द मनी बैक अब्रॉड. I hope the country finds a solution to we just need a consistent startup policy to be driven by either the Ministry of Finance or the Ministry of IT or the Ministry of Industries or the Ministry of whoever. Biggest opportunity that lies in front of regulators in Pakistan today to unlocking the dollar inflow into Pakistan. And I really hope that the tech show is not just highlighting these things, but our message goes across and कोई ना कोई कहीं ये सुन ले बात और देख ले and you know. नहीं देखिए हम finally. हम regularly ministries के साथ बात कर रहे हैं. I think there's a lot of willingness to look at it, but we just need that one leader, that one champion from one of the ministries to step up. That one revolutionary. Some senior bureaucrat who says, you know what, let's fix this. Yeah, and create that. Yes. Yeah, that impact, वो जो revolution वाली बात होती है ना. बिल्कुल. Thank you, Omar Saab. This was wonderful. Thank you so much for having us over and for this wonderful talk. I am deeply honored that Kamran chose Nick as the venue for this amazing show. And you know, Kamran, I wish you all the best of luck. The more information we can get out there, the more awareness we can raise, the faster this ecosystem is going to grow, and it's going to be thanks to people like you who really want to tell the stories, get the message out there, and really make an impact. So thank you so much.